हेलो गाइस। सो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने हाउ टू क्रिएट अ क्लास एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स एंड उसके बारे में थ्योरी इंफॉर्मेशन और प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके भी देख लिया। सो लेट्स बिगिन विद सम एग्जांपल एंड चलो ट्राई करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं इमीडिएटली, क्योंकि एक टॉपिक है तो एक टॉपिक के बेसिस पर एक टॉपिक खत्म हो जाने के बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन के तरफ बढ़ेंगे। सो गिव मी गिव me some questions on this. सही है, कुछ क्वेश्चंस देगा। Great. Here some basic practice questions on class and objects. So basic level questions are: create a class student with the properties name, roll number, and marks. Create two objects of a class. Print their details with these method. And then second question is: write a class mobile with the properties brand and price, and a method call which print calling, and create three objects with a different data and call the methods। देखो different data and call these methods calling बोलकर, and then make a class rectangle with the properties length and width। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। Add a method area to calculate and print the area, create an object and print the area। wow, nice। so intermediate questions भी यहाँ पर दिए गए। चलो थोड़े बेसिक क्वेश्चन के स्टार्ट कर लेते हैं एंड देन इंटरमीडिएट की तरफ बढ़ेंगे। So first one is: create a class with the student properties and create a two objects of a class and print their details with the uh, details using method। मेथड यूज करके ही उसके डिटेल्स को प्रिंट करना है। तो यहाँ पर ले लेते हैं। सो चलो चलते हैं हमारे यहाँ पर एंड राइट क्लिक ऑन दिस पैकेज, क्रिएट अ क्लास एज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। सो यहाँ पर लिखूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड देन यहाँ पर देना चाहूंगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम अंडरस्कोर जीरो फर्स्ट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम फर्स्ट हो गया। तो प्रॉब्लम फर्स्ट ये मेरा पब्लिक यानी फाइल है, स्ट्रक्चर है जो कि मेन फाइल है। तो उसके अंदर मैंने मेन मेथड बना दिया। अब ये हो जाने के बाद नेक्स्ट वन इज आप कहीं पर भी क्लास क्रिएट कर सकते हो, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियोस के अंदर पब्लिक क्लास खत्म हो जाने के बाद क्रिएट किया था। यहाँ पर ऊपर भी आप क्रिएट कर सकते हो एज अ क्लास। यहाँ पर क्लास किसका बनाना है? एज अ स्टूडेंट विथ प्रॉपर्टीज, क्रिएट अ क्लास विथ स्टूडेंट। सो यहाँ पर मैंने स्टूडेंट बनाया, it's just a class, and then start and end curly braces। अब ये हो जाने के बाद inside this student class take properties name, roll number, and marks। let's begin। Take a name is in a string format, so string a name, and then roll number which is in an integer format। ऑब्वियसली रोल अंडरस्कोर नंबर, देखो जो यहाँ पर पैरामीटर दिए गए वही एग्जैक्ट लेना जरूरी है। रोल नंबर इन अ इंटीजर फॉर्मेट, सो लेट्स गिव द इंटीजर डेटा टाइप, एंड देन marks which is in a pointer format, so you can use float or double। so I just want to use as a double, so double, and then as a marks। okay, now it's overall done, and then create two objects of a class and print their details using method. Which is method? There is nothing mentioned, so it doesn't matter। so I just want to print here the question। okay, now it's done। let's begin with this here। I just want to create one method as a void student info। okay, student info, so std underscore या फिर you just name, give a student info। it's just a method name, and then if you want to create a method, please make sure you can give the parenthesis to the method। so parenthesis is very important in when we creating a method।
सो इसके कुछ स्ट्रक्चर है जो इसके बारे में स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसको हम बदल नहीं सकते। सो यहाँ पर स्टूडेंट इन्फो जस्ट अ मेथड नेम, and inside method name it is giving you the information about the student. So let's student info. Okay, student info, and then I just want to print the overall student information in one sysout. So inside these I just want name, and then plus operator name. After that name I just give the backslash t, and then roll number. No, first is a roll number, and then I just want to give the name of this student. It depends. Okay, no problem. So roll number, roll number, and then plus operator and roll number. After that, backslash t for marks. Okay, colon, and then plus operator and then marks. Okay, ओवरऑल इन वन सिस आउट, एक सिस आउट के अंदर हमने सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिख दिए। एंड देन आई जस्ट वांट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन किया था क्रिएट टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस क्लास, एंड देन print the overall details. So यहाँ पर create कर लेते हैं. So I just want to create object of a class. So make sure you just use a new keyword to creating an object. So यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा student with the parenthesis is there. This is the structure. Huh? So as a reference, student with the name as a student1. Whatever, you just give the name as a student1. So s1 s2 it's not good to write a object name, so make sure you can use a proper described name to give an object or variable. हाँ, एक proper describe होना चाहिए. And then student1, I just want to say the properties about the student. तो मुझे यहाँ पर उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा. So as a name I just give the Hinata as a student name, and then I just want to give the marks of student Hinata, which is and Hinata is a very brilliant student, so 98.6. And then student1 dot roll number. It's roll number is in an integer format. I just give them 7 as a roll number. So मैंने दे दिया. Is 77 भी हो सकता है. It depends. And then I just want to print the overall information. देखो मेन मेथड ही एग्जीक्यूट होता है, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली रन भी कर लेता हूँ तो ये प्रिंट भी कुछ भी नहीं करेगा, और ये ब्लैंक कंसोल पर प्रिंट होता है. देखो ब्लैंक कंसोल पर प्रिंट हो रहा है, बट मुझे यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिखानी है. सो यहाँ पर student1 का ऑब्जेक्ट लेकर मैं उसके स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को कॉल कर सकता हूँ, जो कि मुझे यहाँ पर प्रोवाइडेड है. सो राइट क्लिक किया, रन एज किया, जावा एप्लीकेशन कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हो नेम हिनाटा, roll number 77, and then there is a marks 98%. Okay, and same as it is, I just want create next object. So copy and then paste here, but make sure you can give the different naming convention when you create a new object. So यहाँ पर मैंने student 2 दिया, जो कि नेम यहाँ पर देना चाहूँगा मिकासा. Mika's also brilliant students, so I just giving them marks as a 90, 88 and 17, the roll number. So right click, run as Java application. So here is the information about the Hinata, and second information is about the Mikasa. So here is the name,
रोल नंबर एंड देयर मार्क्स। जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया था वो सारा कुछ पार्ट यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। सो तो द प्रैक्टिस, और सेकेंड एंड थर्ड क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस करो, आपकी स्क्रीन के सामने अवेलेबल है, तो मेक स्क्रीनशॉट एंड देन डू इट। सो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो और पॉज करके भी यहाँ पर आप इस क्वेश्चंस को नोट डाउन करो और उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। सो सी यू गाइस, टाटा बाय बाय। सो प्रैक्टिस करते रहना, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करना मत भूलना। सो सी यू गाइस।